unit 5, that was seed and seed. Yes, we have learned about so many new things about the seeds, how to cook and how we can use the seeds in a different manner. Okay, so today the new lesson we are going to start with unit 6, water is life. First of all, I want to tell you the meaning of this. Water is life. इसका मतलब क्या है? Yes, without the water we can't expect our life. हम लोग हमारी लाइफ में without water सोच ही नहीं सकते. How we can live without water? So the first main use of water is for drinking. If just think about it. If you will not get water for one day, चलो one day नहीं. Let's talk about the half day, 12 hours. If you will not get the water for 12 hours, what will happen? You will feel very weak, uneasiness. Maybe you will get fainted also. आप बेहोश हो जाओगे. You will get unconscious. Why? Because your body is not getting the proper amount of water. So there are so many different uses of water. For a small purposes also we need water with us, right? For drinking, bathing, washing, cleaning the clothes, then washing the fruits and vegetables. Yes, for cooking purposes also. Not a single sabzi, vegetable, dal, pulses, it will not be cooked without the water. Without the water, we can't expect a single moment of our life, because water is connected to each and every point of our life. For cooking also, yes, for the digestion process also. As we have completed unit 3, from tasting to digesting, in that also I have explained you, for the digestion process, water is must for your body. If your body is not having the proper amount of water, the digestion process will not be completed properly. Okay, so today we are going to start with a new chapter, that is water is life. There are different short stories who will teach you the proper meaning of water, okay, and who will tell you the proper importance of the water, correct? Okay, so let's start with the first story that is connected with our chapter, that is water is life. The first is Gharsi sir. What is a Gharsi sir? Let me tell you. Sir, we will let half the word. हम लोग इन दोनों words को break out कर देते हैं. Gharsi and sir. Gharsi is the king name which was living in the Jaisalmer. King Gharsi of Jaisalmer. कहाँ पर रहते थे वो king? Gharsi. And what is the meaning of sir? Sir, it means lakes. Sir, it means lakes. So here we are talking about the Gharsi sir. The king Gharsi has made so many lakes in the Jaisalmer. And why he has made? Let's clear about that. King Gharsi of Jaisalmer made 9 lakes. कितने lakes बनाए थे उन्होंने? 9 lakes. Why? What was the purpose? So just see it. Ghats all around the lake with steps. Yes, he has made the ghats also. Ghats का मतलब क्या होता है? Let me clear with you. See, suppose this is a lake. उसके आसपास में यहाँ पर घाट बनाए जाते हैं for different purposes. See, this Gharsi sir was made around 650 years ago. कितने साल पहले बनाया गया था ये? 650 years ago. Earlier, the washing for clothing, washing the clothes, washing machine was not there. So persons were going nearby the lake and then they were washing the clothes there. So these ghats are used for washing the clothes, for bathing also. They were taking their animals also to take bath in the lakes, and then they were also using these lakes water for their normal regular life purposes also. वो अपने regular life में भी ये lakes का पानी use करते थे. So ghats all around the lake with steps. Steps, it means there were steps to come down nearby the lake. Lake के पास आने के लिए, उन घाट्स के पास पहुंचने के लिए there were separate steps. Steps. What is the meaning of steps? It means steps. नीचे उतर कर वो लेक्स के पास आते थे. Verandas, large halls, rooms to celebrate festivals and music dance programs. Yes, this was also made earlier when the lakes were there at that time, around 650 years ago. King Gharsi has made the different big one halls, rooms. उसने अपने पैलेसेस भी जो लेक्स के आसपास थे उसको ओपन कर दिया था for normal traveler person, tourist person or anyone if they want to visit. So they can go there in the large halls, rooms and verandas. What is the meaning of veranda? It means the open play area for the children. बच्चों के लिए एक open play area which is having the very cool climate because it is nearby the lakes. So why the persons were going there? For celebrating the festivals. Yes, maybe आपने सुना होगा कि है ना काफी सारे पर्सन घाट पे पूजा करने जाते हैं. As we have also one घाट nearby इंदिरा छठ पूजा घाट. That is the ghat one example for you. आप जब उस घाट पर जाओगे तो you can able to see there will be so many flowers, then coconuts. It means वहाँ पर आपको पूजा के सामान बहुत दिखाई देंगे.
थे. Why? Because that ghat is specially for the festival celebration. Persons are going at this ghat to celebrate the festivals, to worship the god in a different way. वो अपने गॉड की वर्शिप करने के लिए भी घाट का विजिट करते हैं. एंड यस, म्यूजिक डांस प्रोग्राम्स. यस, अर्लियर there were no theaters and all. So what was the thing? Their persons specially they were arranging music and dance program near the lake area. Why? Because lake area is having the very nice view and very cool climate. That's why the music and dance programs were also held by them. Then the main purpose to collect rainwater over the many miles. Now King Gharsi has made 9 lakes. उन्होंने 9 lakes बनाए थे. But what was the reason of behind that? क्या रीजन था उन लेक्स को बनाने का? सो लेट मी क्लियर विथ यू. ही हैज मेड 9 लेक्स जैसे वो रेन वाटर कलेक्ट कर सके. एज अ रेन कम्स द फर्स्ट लेक गॉट्स फुल. अगर सपोज फर्स्ट लेक फुल हो गया तो व्हाट विल बी डन? द एक्स्ट्रा वाटर विल डायरेक्टली गो टू द सेकंड लेक. Then second full, then it will go to the third lake. Then from third it will go to the fourth. Likewise the series will be followed. उन्होंने ऐसे 9 लेक्स बनाए थे जैसे वो लॉन्ग डिस्टेंस तक रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं. एंड द रेन वाटर विल नॉट बी वेस्टेड. जैसे रेन वाटर वेस्ट ना हो, इस वजह से उन्होंने ऐसे 9 लेक्स लाइन बाय लाइन सीरीज वाइज बनाए थे जैसे वो उसका यूज अच्छे से कर सके. एंड यस, इट इज रिटन इन द बुक दैट दिस रेन वाटर कलेक्टेड दे वर यूजिंग फॉर थ्रू आउट द ईयर. यानी पूरे साल के लिए फिर वो इस रेन वाटर का यूज कर सकते थे फॉर डिफरेंट purposes. Okay, so here we have learned about the King Gharsi who has made 9 lakes for collecting the rainwater and to solve the problem of his villagers. Okay, so now we have completed the one story of King Gharsi of Jaisalmer. Now here we will start one new story of a traveler. The name is Al-Biruni. Yes, the name is Al-Biruni and he came from Uzbekistan. कहाँ से आए थे वो? He came from Uzbekistan. Why he was called as traveler? Because he was coming to India to observe new things, whatever we have, like the big buildings, lakes, rivers, the design of our buildings, the construction of our Indian country, that all the things he wants to observe and he wants to note it down. That's why he was continuously coming to India again and again to observe so many new things. So to observe and to note down, yes, he was noting down all the things in his diary. वो अपनी डायरी में, एक नोटबुक में सारी चीज़ों का नोट बनाते थे अच्छे से. एंड ही वॉज राइटिंग ऑल द थिंग्स इन डिटेल. वो सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में लिखते थे. एंड देन ही वॉज टेलिंग दैट फॉर इंडियन लेक्स. उसने इंडियन लेक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है. तो उसका एक छोटा पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक में. फॉर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, इट इज रिटन, इंडियन पीपल आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग लेक्स. यस, ही वॉज टेलिंग कि जब भी इंडियन पर्सन की बात आती है ना, तो दे आर वेरी कैपेबल टू मेक लेक्स. यस, जब भी उनको लेक्स बनाने होते हैं. हाउ टू मेक द लेक्स? द पर्सन्स आर डिगिंग द ओपन प्ले एरिया. वो ओपन का जो भी प्लेन एरिया होता है, दे आर डिगिंग इट. वो पूरा अच्छे से डिगिंग करते हैं. एज यू नो दैट अंडर द ग्राउंड वाटर इज देयर, सो दे आर डिगिंग अंटिल दे गेट द वाटर. वो डिगिंग करते हैं अंटिल दे गेट द वाटर. और जैसे ही वहाँ पर पानी आना स्टार्ट होता है, दे आर मेकिंग अ बिग सर्कल लेक. वो वहाँ पर एक लेक बना देते हैं. सो ही वॉज टेलिंग दैट द इंडियन पीपल आर वेरी स्किल्ड. वो बहुत ही अच्छे हैं. स्किल्ड यानी उनका ये काम बहुत ही अच्छा है. दैट इज वेरी अप्रिशिएटेड. एंड टू मेक द लेक्स, what they were doing extra, use rocks and iron rods to build chabutras. What they were doing, Indian persons after making lakes, there are so many sitting arrangements near by the lake. आपने नोटिस किया होगा कभी, जब भी आप लेक एरियाज में जाते हो तो वहाँ पर पत्थर से ऐसे छोटी सिटिंग अरेंजमेंट होती है. whether it is bench or small chair like shape is there, so that is called as a chabutras. क्या बोलते हैं उसको? chabutras. How it is made? with the help of used rocks. बड़े बड़े पत्थरों को लिया जाता है. एंड देन वी आर बाइंडिंग देम विद द आयरन रॉड्स. उनको आयरन रॉड से बांध दिया जाता है. एंड वी आर गिविंग देम अ सिंपल शेप. हम उसको एक सिंपल सा शेप देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द chabutras for sitting of the travelers or tourists whomsoever is coming. Long staircase for going up and coming down. Yes, as I told you, यहाँ पर क्या होता है, लेक्स के आसपास मैंने आपको बताया घाट बने हुए होते हैं. See, this is a lake. यहाँ पर घाट बने हुए हैं. तो under to the 4 corners, right? So to come this ghats, nearby to this ghats, what is the thing? Here there are stairs. यहाँ पर stairs होती हैं to come down and to the go up. There are separate stairs to come down and to go up. Why? जैसे कि वहाँ पर ज़्यादा रश क्रिएट ना हो, क्राउड क्रिएट ना हो. क्राउड इट मीन्स भीड़. वहाँ पर ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए. See, if one staircase will be there to go down and to go up also, so it will be problematic.
the persons will get stuck to each other, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, right? So here the Indian persons are making two separate steps to go down separate and to go up separate stairs. They are making that also he has written, right? And yes, as I told you, Gharsi king has made 9 lakes. तो क्या वो अभी यूज में है? No. Right now that 9 lakes are not available. Now at that place of lakes there are big buildings, colonies, different societies have made, and now the rainwater is not getting collected. अब रेन वाटर कलेक्ट नहीं होता है. नाउ द रेन वाटर इज गेटिंग वेस्टेज इन द ड्रेनेज सिस्टम, और ऐसी जगहों पे उनको फेंक दिया जाता है बिकॉज रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं है. ओके, नाउ हियर वन ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट टॉपिक इज देयर. इन दैट यू हैव टू ऑब्जर्व द सिचुएशन आउटसाइड ऑफ योर हाउस. आपके घर के आसपास कैसी एरिया है, वेदर इट इज कूल, हॉट, इज देयर एनी द लैंड दैट इज फ्लैट, क्या वो लैंड फ्लैट है, और अदरवाइज स्लॉपी, क्या वो स्लॉप शेप में है, और अदरवाइज रॉकी, इट मीन्स टेढ़ा मेढ़ा है, यानी पत्थरों की वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है. सो नॉर्मली आउटसाइड ऑफ अवर हाउस व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व कि आपके आसपास की एरिया कैसी है. इज देयर एनी ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम इट मीन्स आपको पता होगा जहाँ से गंदा पानी पूरा गटर में जाता है, या पिट्स होते हैं, जो भी कचरा होता है, दैट गोज डायरेक्टली टू द ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द ड्रेन्स. आपके घर के आसपास ड्रेन सिस्टम है. Now here what we have completed today, the King Gharsi story, how he has made 9 lakes, how they were collecting the rain water and they were using for the throughout the year. And next topic we have completed today, that was Al-Biruni, the traveler who has written so many points about Indian persons and their habits, the designs, the buildings of our India, how they are making the lakes, that all the things we have completed today. In the next lecture we will continue with the next topic. Thank you.